I hope we are live. I hope we are live. Hello, hello. I hope everybody's audio is coming. Hello, hello, hello. Hi, 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 hi. Just give us 1 second while we Wait, confirm the audio. yeah. क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? I think we are good. Yes. Awesome. Hello, 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 everyone. Hi, Okay. Osani. Hi, Shriharsh. Hello. Hello. Hi guys, hello, hello. Yeah, मैं भी check कर रहा था voice अपने end से. That's why. But yeah. We are live, guys. Yes, everyone who's joining this stream. This is our eighth stream, I guess. Yes, it is our eighth stream episode, whatever you want to call. First and foremost, welcoming all of you to the Offside Takes. This, as I said, this is our eighth stream, and this is an experiment that we started out in January. This has been going on ever since, and we tend to keep it going on up until जब तक हम चला सकें और जब तक हमको लोग अच्छे से यहाँ पे आते रहें तब तक. This is me, Shriharsh, and I'm a Chelsea fan. You can see I'm wearing and also happy birthday Chelsea, and same to you, Shreya, as well, because fellow Chelsea fan. And then eventually I've been joined by Siddhant Osani. Osani is a ardent Barcelona fan. Yeah, he's also showing his crest. All right, and then the duo, मतलब एक के साथ एक free combo from Hyderabad. That is Bishal and Shreya. Bishal is a Manchester United fan, and Shreya is a Chelsea fan, as I said already. Yes. So, hello guys, how are you doing? How's everyone? Please. Yes, I'm not well, so I might be coughing in between. I have a bad cold. Just saying. But No all issues, good. no issues, no And issues. for my part of sadness, so I'm wearing this East Bengal का एक T-shirt. Because he's a you are a East Because I'm an Bengal. East You Bengal just told fan. about in the last stream as well. Yeah. And the reason I'm wearing it today is because we have a derby match going on, East Bengal versus Mohun Bagan right now, In where we are ISL. in ISL, where we are beautifully losing by 2-0 in halftime, which Poetically includes, losing. which includes a penalty miss by East Bengal. So सदमे Incredible. में पहन रहे हो तुम. हाँ. समझ. नहीं पहना तो खुशी में था उन्होंने, बट अब सदमा लग गया, क्या करें. कंडीशन समय समय की बात है, बट खैर अगर आप फर्स्ट टाइम इस स्ट्रीम पर कहीं से भी, या अगर आप पहली बार ऐसे मतलब ड्रॉप इन हो रहे हैं, आपको एल्गोरिदम बाबा की कृपा हुई है कि आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस. दिस इज एज आई सेड, ये अपन छोटे छोटे मोटे लोग हैं जिनको लगता है कि दे हैव सम फुटबॉलिंग ओपिनियंस विच इज वेरी गुड, एंड आई गेस हम अपने आप को भी थोड़ा सा फनी समझते हैं. तो हम लोग का जो ये जो गुब्बारा हम लोग बना के रखें कि हाँ वी आर गुड वी आर दिस, तो उसको उसमें थोड़ी और हवा भरने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब के साथ साथ उसमें बेल आइकन दबाने का भी एक ऑप्शन होता है, जिससे क्या है कि वॉट एवर दैट कम्स अप, क्योंकि हमारी कम्युनिटी पोस्ट भी चलती है, हम मतलब जो भी एक्सेप्ट होता है फ्रॉम ईच एवर ऑफ स्ट्रीम्स, वो भी हम डालते हैं अपने मिड वीक जो भी, क्योंकि हमको एंगेजमेंट चाहिए ना, इसके लिए डालना पड़ता है. और फिर उसके बाद शॉर्ट्स का काम भी होता रहता है, सब चलते रहता है अपना मतलब यहाँ पर. तो प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब सब करिए. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां भी आइए, वहां भी फॉलो कर लीजिए. वहां पे भी नॉट ओनली डिस्कस, हम मतलब try to indulge with whoever that is the one who's seeing our posts or stories on Instagram. So वहां पर भी आइए, आपको अच्छा लगेगा. और भी आगामी कुछ कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे. It will be really beneficial for you. And because the only reason you're coming here because you're football fans, so you'll get at least the football bit of it. Also, we have a Telegram group. So फॉर एनीबडी हु इज न्यू आउट हियर, टेलीग्राम का अपना बहुत जबरदस्त ग्रुप है जो 2-2.5 साल से चल रहा है. एंड दैट इज 2-2.5 साल इज मतलब वो अच्छी कम्युनिटी हमने बिल्ड करी है. कम से कम ऐसे लोग नहीं है जो वहाँ पे निष्क्रिय होते हैं, वहाँ पे सबके सब बात करते हैं हम लोग, सबके सब बात. उस ग्रुप का नाम, उसमें आप अगर आप हमारे लिंक में जाएंगे तो मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहां से जाइए. वी स्पीक फुटबॉल इंडिया का ग्रुप होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए. एंड गेट कनेक्टेड टू फेलो इंडियंस हु आर पैशनेटली डिस्कसिंग अबाउट द ब्यूटीफुल गेम दैट वी लव, दैट इज फुटबॉल. सो हाँ, लेट मी टेक थोड़ा सा ब्रीदर. लगातार एक सांस में निकला है वो सब फ्लो में. And Yeah. I just want to say that finally we are feeling like a professional YouTube channel the moment Shriharsh said bell icon दबाइए. दैट इज इम्पोर्टेंट भाई. नहीं मतलब क्या है ना कि This is हाँ the And he's first time. remembered. 8 स्ट्रीम्स के बाद हमको पहली बार याद है कि बेल आइकन वाला भी होता है.
मैं भूल जाता हूँ। हमारी हमेशा से प्रॉब्लम रही है ना कि आई ऑलवेज एंड अप मिसिंग। मैं लोगों को शुरू में ही बोलना कि भैया आके सब्सक्राइब मारो, क्योंकि आप कुछ देखे ना देखे, कम से कम पहले का 15-20 मिनट, 15 मिनट तो देख भी करेंगे, तो कम से कम इसी में आपको दिख जाए कि हाँ कुछ बंदे हैं, हम लोगों का थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए करते रहिए। बट खैर, आज हम लोग जिन जिन टॉपिक से बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली One आपने is going अगर on. thumbnail- हाँ, one हाँ is एक तो going on, चल which भी is रहा है। like, वो सिद्धांत आधा टाइम उधर देख रहा Even I है। am मैं also. खुद, मेरा आंख इधर जा रहा है, अभी एक मोमेंट क्रिएट हुआ था, मेरा आंख इधर तक गया था, एंड आई वाज स्पीकिंग समथिंग, आई सेड आई विल, मैं कुछ बचरिंग कर दूंगा, बट बच गया था। बट खैर, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आज हमारा जो ऐसे टॉपिक, एज आई सेड, सी दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 2 months लेफ्ट इन द टाइटल रेस। मार्च लग गया है। आप एक बहुत एक्सटेंसिव इंटरनेशनल ब्रेक पे जाएंगे 16 तारीख से, 16 मार्च से, तो ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास सिर्फ अप्रैल और मई है, और मई भी थोड़ा सही है, बट अप्रैल मई तो पूरा आपके पास है सही साथ। दिस इज द बिजनेस एंड ऑफ द यूरोपियन फुटबॉलिंग कैलेंडर, और इस बिजनेस एंड में ऐसी बहुत सी लीग्स हैं जो कि बहुत क्लोज टू कॉल हैं, या फिर उसमें अभी कुछ टाइम पहले तक इतनी टाइट सिचुएशन बनी हुई थी, या फिर हो सकता है आगामी बन भी सकती है, यू नेवर नो। सो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट एटलीस्ट द टॉप 4 लीग्स, एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द अदर लीग्स, विल टच अप, बट जो मेन टॉप 4 लीग है उनके बारे में हम बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द प्रोपोजिशंस, कौन बन सकता है, कौन जीत सकता है, कौन एक डार्क हॉर्स है जो अभी भी पीछे में जिसका थ्रेट लूम कर रहा है। देखने वाली बात होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपन, क्योंकि सी लेट्स बिगिन इन, क्योंकि हमारे पास एक बार्सिलोना फैन भी है, एज आई सेड, सो बेहतर है कि हम वहीं से शुरुआत करते हैं अपना बार्सिलोना का जो मतलब ला लीगा की बात करना। सो आई विल टेक ओसानी's व्यू फर्स्ट। ओसानी ब्रो, व्हाट इज, वेयर इज एंड हाउ इज बार्सिलोना? For once I'm happy कि 5 points का ही गैप है रियल मैड्रिड से, but still 5 points का गैप है, and it's a 16-year-old who's saving Barca's ass right now. So I'm नमिनी pretty अमल, hopeful. नमिनी अमल वही ना। Yeah. So he's scoring bangers at 16. So I'm he should be there at Barca. He shouldn't leave the club because at 16, if he's at this potential, Barca can like make him into a good player. I'm पर just तुम saying लोग good के साथ player. प्रॉब्लम ये भी होता है ना यार ओसानी, कि तुम लोग अच्छे अच्छे जो छोटे छोटे बच्चों को इतना खिला देता है छोटी एज में, कि जब तक वो बड़े होते तब तक तो उनके अंदर मतलब स्टेमिना ही नहीं बचता, पूरे They tired खुश out, I know you're talking about Pedri, but not every player is Pedri. Fati, Pui, Pedri, how many examples do you want? अब बोलना। I didn't want you to take his side, but ठीक है. It's okay. But I think the team needs to step up because 1-0 is not something that you can like take. It's Mallorca and you should beat them by a easy margin. And the chances that we had, easy, like 4-5-0 easy था, जो 1-0 ही जीते. So ठीक है, 3 points are 3 points, but yeah, still disappointed with the way that finishing नहीं हो रहा था. Yeah, because But now yeah. you're like 5 points away from winning Five the is, league. yeah, but one. We are but not we have getting a the game in league hand. for sure. For sure, the That's league what- is not ours. For- I've accepted that fact like midway through the season when we had a bad run of form that we are not winning. So that's fine. But what is this dichotomy of this guy, Robert Lewandowski? Sometimes he scores 5, then he doesn't score. What? So our forwards are also going through a rough patch like your forwards. So we are having problems with like No, but even Vitor Lewandowski Roque. does score sometime, and when he scores, he's like, okay, 2-3 goals, and suddenly he's like, okay, I will not score at all. And then There are some issues I think with the forward line. Ferran Torres injured, then Vitor Roque not in form. Lewandowski just he's like having like purple patches in a game or two. But I think front line needs to get it sorted because Rafinha is trying his best. Yamal is trying his best. There are players who are giving their all, but then finishing नहीं हो रहा है तो also, who that is is this Pau guy? कोई तो नया Pau आया. Now Gubarsi, I was going to talk about him saying that good La Masia spawning again. New Pokemon is out, so he's a good. सबसे he's a ज्यादा good Pokemon. सीजन में सबसे ज्यादा पोकेमॉन तो मतलब कुछ भी बोल लो, बार्सिलोना ही निकलती है। चेल्सी तो यूं ही बदनाम है मतलब।
मैं मुंह मत खुलवा लो, but ठीक है. It's fine. अरे खोल ना ब्रो, यहाँ पे आपको क्रॉस करनी है लाइंस, आप यहाँ नहीं मुंह खोलेंगे तो कहाँ खोलेंगे? Okay. But yeah, I think all these players that are coming from the academy, they are playing in La Masia first and then coming to the team, which is a good step because they're not jumping directly to the main team. They're getting some experience at least with La Masia. And Kubarsi, man, that guy is doing really good. Like if he stays in the first team, I heard that he's not going to stay with Athletic, like Barca Athletic now. He's going to move to the main team and then he's going to act like a backup option or maybe a starter as well for Where with does he Araujo. play? LCB. Okay. But okay, moving on to Barca and Moving on from Barca. from Barca to the league, La Liga. Where is Girona? What happened to Girona? Wow. I Girona think only Girona second. second. ऐसा भी नहीं second कि on the जिरोना table. कहीं और ही चला गया, जिरोना बस गिर गया है, गिरोना टू सेकंड पोजीशन. Girona Girona हो गया. वाह 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 वाह, वर्ड प्ले, वाह 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 वाह. But even I think before we talk about Girona, I think the big topic that was there was Real Madrid's last minute goal that was disallowed. Yes. Yeah, That was I a think this very season big we- I topic. think we spoke about it. Yeah, you weren't Yeah, there. we talked about it लास्ट वाले पे ही बात I किया ना thought हमने that match शायद. happened. हाँ. Oh, my bad. बताओ, इनको दिन तिथिवार का पता नहीं है कि किस दिन बैठे हो क्या यार. हो Life of a Barcelona fan. sort of Chelsea as well. I am not going to say कि अपनी नहीं है, but खैर अभी हम Cross लोग the देखिए, line. Cross the line. अभी अपन वीकेंड से खुश हैं ब्रो. हमारे 10 दिन से हमारा जो मानसिक संतुलन है हम चेल्सी फैंस का बहुत That's अच्छा why है. you तो play. जस्ट लेट That's why you play on a Monday. हाँ, to ruin the mood for the entire week. At least Monday तो वैसे ही खराब होता है ना. But खैर मतलब I was saying Girona, मतलब we just started talking about Girona. भाई उन लोगों ने एक टाइम तक बोला कि यार we are contenders. Yeah. अपन मतलब है ना, कहीं से तो उठी है. हमारा सिली सीजन है, जैसे F1 का सिली सीजन चल रहा है ऑफ द ट्रैक, वैसे ही जिरोना ने भी अपना सिली सीजन बनाया. एटलीस्ट दिसंबर तक ये चल रहा था वेयर दे वर टॉपिंग द लीग एंड बाय क्वाइट अ मार्जिन 5.4 पॉइंट Yeah, समथिंग yeah. पॉइंट. 5-4, but like I 3-4 mean, में. Madrid always had At a game least. in hand and all. हाँ But हाँ they were in contention definitely within 1-2 points. Yeah. of everything. yeah, and Girona comes under the city footballing group है ना. So उनको एक वो वाला फायदा भी है वो सेटअप का. उनको मे बी इसके अंदर इन लोग कोचेस भी वगैरह एक्सचेंज करते होंगे. तो इन ऑल वो जो क्लब है Girona, आप इस सीजन की उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उनका प्ले अच्छा हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना. हो सकता है कि वो अभी वो मतलब होता है ना, वो विनर्स मेंटालिटी वाली बात होती है. कैसे आपको मतलब हम बोलते हैं ना कि वाई रियल मैड्रिड ऑलवेज टेक्स द चार्ज. हमेशा वो ऐसे आगे क्यों बढ़ जाती है, अचानक से क्या हो जाता है, सब लोग जीतते रहते हैं बट अचानक से रियल मैड्रिड कहीं से कुछ तो निकाल लेती है. एंड सेम गोज विद द UCL as well. That there's a reason why they have won these many UCLs and they are already sitting on top of everyone. So I just want to know, मतलब Osani is an ardent follower of La Liga as you said and amongst all. भाई but Osani एक बात बता, मतलब कहीं से भी लग रहा था कि ये जिरोना टीम, क्योंकि एक होती है ना क्वालिटी वाइज, व्हाट इज योर सेइंग, इनके में कुछ था वो क्वालिटी ऐसा. Long term, I think the thing was everyone thought it's going to be a Leicester season, where Girona was a small club. हाँ Who they thought कि ठीक है Leicester जैसे वो लोग they'll win it. But the main thing with the whole season is like injuries. You have so many games during the whole year, and they were fighting relegation like couple of seasons before that. So from going to that to challenging for the title is different. Your mentality has to change from like losing points as well. If you're losing even 1 point or 2 points, that makes a difference. Now they're 4 points behind Madrid. I don't think they'll come in the Champions League. They'll be knocked off the league because those teams that are coming in the Champions League are not small. So those teams are going to knock Girona off. And all the players of Girona are going to move from the club. Yeah. Because one good season, and I think those, of course, City is going to pick maybe half the players because same parent, like, मतलब the पैसे वही है, ठीक है. But Girona, I think it was hyped that they will do it in the first season. It's kind of like Bayer Leverkusen, but Bayer Leverkusen is doing it. Actually, Girona is not. But I mean, funny thing is, I think La Liga में for the past
two seasons at least, I've seen there's one team which suddenly goes up. Start of the season they get a lot of points and थोड़ा सा hype बनता है, अच्छा मे बी बारसा या फिर मैड्रिड छोड़ के और कोई टीम आएगी. Atletico Madrid is just in the top four. I don't think they have been in the title conversation for some time Yeah. now. But Oh! is it a goal? Is it off? Sorry for Is that. it off? It is off. Sorry. It is off. It is off. 100% off. Oh But, yeah, it's Darwin Núñez. He's on. Yes, it has been Darwin given Núñez, offside. you have to say that. It's offside and it's Darwin Darwin Núñez. Núñez. But coming to my point, there has always been some team, एक एथलेटिक क्लब हो गई या फिर एक रियल सोसाइटी हो गया, who just start the season great and then it's just the thing that you said कि Downhill. number of Downhill. games, just the number of games just to sustain that pressure of winning every game, because Madrid and Barca are winning every game. So you have to also win every game to win the league. The and that's biggest just not example, possible. the biggest example is Sevilla. Two Sevilla. seasons back, Sevilla, they were at the top, and now they're struggling with relegation. So there you go. That you have to be consistent in the league. Like Otherwise, all like Sevilla, the top 4 teams in La Liga were always Real, Barca, Atletico and Atletico Sevilla. and Sevilla. Now it's always like Athletic Club hai, Real Sociedad, Real Yeah. Betis hai. Betis So hai. there are different clubs that are coming to the picture, Yeah. which is because of clubs like Sevilla that are like they're losing out on like points and fighting relegation. इंडीड बहुत इंटरेस्टिंग ही माहौल है वहां पर. बट अगर आप बाकी टेबल को भी देखें तो अभी शायद एथलेटिक क्लब और लास पाल्मास का मैच चल रहा है क्या? Yes, पता नहीं किन where का मैच Athletic है. is या एथलेटिक इज विनिंग है ना. Athletic is winning एंड by one game. एथलेटिक क्लब इज इन Fifth position. यूरोपा लीग या यूरोपा लीग पोजीशन एज ऑफ नाउ. एंड अगर आप टेबल देखें, जो मैं देख पा रहा हूँ टेबल के हिसाब से, बार्सिलोना, जिरोना, मैड्रिड, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है इन तीनों में एटलीस्ट, है ना. ये हो सकता है एक गेम या 2 गेम का रियल मैड्रिड का ब्लफ अप, जो कि हो सकता है आगामी आए भी, सिंस दे आर नाउ गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स. और यू नो एक वो सीजन बहुत क्या बोलते हैं उसको, क्लस्टर्ड सा हो जाता है, वहां पर हो सकता है अंतर आए भी. तो पॉसिबली बार्सिलोना और जिरोना के पास वहां पर चांस हो सकता है. डोंट यू गाइस थिंक? No, I definitely don't. I definitely don't think. I'm not giving myself that hope. ETK Madrid is going to mess up. I know they're not, so I don't want to give myself No, I that mean, false not hope. thinking as a Barca fan, but just as a football fan, do you think Madrid can sustain with? I mean, they have so many injuries and everything. So, do you think they can sustain winning all the games? Yes, yeah. they have that mentality. They have Carlo. They can sustain it. Yeah, they And can. they have Bellingham who scores even after the whistle. So why? What's the issue? Barca they've is got just 1 point below Girona. yeah. एंड ऑल्सो दे आर प्लेइंग सेल्टा, रियल मैड्रिड, जो भी उनका 27 गेम्स हुआ है, सबका 28 हो गया बट उनका 27 है. सो दे आर प्लेइंग सेल्टा, तो पॉसिबली सेल्टा सीट एट 17th पोजीशन. सो मतलब यू नो एक मतलब कितना 65, हाउ मच विल बी द गैप इफ दे विन दिस? 4 है तो 7 हो जाएंगे. हाँ, 7 हो जाएगा, या 7 पॉइंट का गैप बन जाएगा There इस वाले मैच. there is a El Clasico match. I'm not sure of what date it is, but that match is going to be crucial because if that match switches, if we get the win, I'm not keeping my hopes up again for that. But if we get the points, then maybe that can be a changer. You're asking about the date of that El Clasico match? It's 22nd of April, so that is Oh, a quite very late in the interesting season. match. Yeah, that's very late in the season as well, na? That's also. So you never know by then क्या रहेगा situation. Also, you guys were saying कि Sevilla they are 14th and that is such a downfall for that club. Considering वो club it is always known for its Europa League stature. कितना उन्होंने यूरोपा की, जैसे अगर हम बोलते हैं कि रियल मैड्रिड जो है उनके पास चैंपियंस लीग है और चैंपियंस लीग वो भर भर के जीतते हैं, ये भाई साहब लोग इनका यूरोपा लीग का काम रहता है. बट अनफॉर्चुनेटली दे आर राइट नाउ 14th एंड दे आर समवॉट they are only 5 point clear of the relegation table. Damn. So मतलब इनका भी bluff up हुआ कुछ ना कुछ. And let me see their matches. They're clear from relegation, but they are 5 points away. Yeah.
इनका टू बी वेरी ऑनेस्ट बार्सिलोना बचा हुआ है अभी खेलने का, एथलेटिक क्लब बचा हुआ है इनका खेलने का, और विला रियल बचा हुआ है खेलने का, तो कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग मैचेस हैं जो, और दे आर प्लेइंग बार्सिलोना ऑन द लास्ट मैच. Was it a Okay. goal? Wait, Yes, अंदर that's a से goal. Oh, it's a goal. It's a goal. That's a goal, that's a goal, that's a समझ goal, में guys. नहीं That's Yeah, a goal. समझ में नहीं आया. मुझे Yeah. लगा बॉल बाहर गया है. Okay, so guys, John Stones John has Stones scored. has scored for Manchester City. Wow. Wow, very interesting. From deemed to be the worst transfer when he came to the player he कि is वो now. पेप के सिस्टम में इतना अच्छा ढला है ना वो, तो मतलब आप मतलब ये चीज तो भूल जाओ, पेप ने उसको बना दिया है. Yeah, John Stones is acting like he won the league, but yeah. This makes it interesting if the result stays. भाई अवे दे आर विनिंग 1-0 and against in Liverpool in a hostile crowd like Liverpool, so Yeah, true man. Liverpool. I don't know. They give such a Dude, weird vibe. dude, that near post defense was shit. Yeah, it's Kelleher. Like, what It- do you expect? who no but no Tottenham Darwin Núñez. McAllister. Darwin No. Núñez was marking Stones. अच्छा, In this yeah, game. na, What Nunes. exactly? How the hell can you leave a That player? was a funny goal. Dude, He was so clear. KDB. How are you allowing a player to be so clear? KDB see, got Kelleher an is assist at fault because he can near post, but the defenders are at fault as well. हाँ मतलब ये तो बहुत अजीब सा गोल कंसीड किया इन्होंने ऑनेस्टली. आई गेस लेट्स कम टू आवर डिस्कशन बैक, बिकॉज ये मैच तो चलता रहेगा, और अपन जब इसका हाफ टाइम हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम तक लोग थोड़े आएंगे. बट अगर आप इस स्ट्रीम को कहीं से भी देख रहे हैं तो प्लीज अपनी ओपिनियंस ऑन द कमेंट बॉक्स उसको ऐसे डालते रहिए, उसको फेंकते रहिए. वील पिक योर ओपिनियंस आउट ऑफ देयर. So you can see, this is how things are going in. बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है, एज आई सेड 5-6-7 पॉइंट का अंतर बना हुआ है इस लीग में, और नीचे की भी रेस बहुत टाइट है इन ला लीगा. सो यू नेवर नो. अभी तक जो 3 टीम रेलीगेट हो रही है वो कदीज है, ग्रेनाडा और अल्मेरिया है. सो ये 3 टीमें तो अभी तक जा रही हैं. सेल्टा बस 2 पॉइंट क्लियर बैठी है, एंड टुडे दे आर फेसिंग, एज आई सेड, एंड ग्रेनाडा और अल्मीरिया का मैच बचा भी है अभी. तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर सीजन हो रहा है. हम क्योंकि जब सीजन एंड हमें जो डिस्कशन होगी उसमें वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट कि क्या चल रहा है, कौन जीता, क्या हुआ. तब तक के लिए लेट्स कीप द थिंग्स गोइंग. सो अब हम अगली लीग के बारे में बात करते हैं. अगली लीग ऐसा है कि इट वुड हैव बीन बेटर टू हैव मितुल हियर. सेरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड ही बीइंग एन आर्डेंट Juventus fan, a very passionate Juventus fan, not only Juventus fan but as of Italian football fan itself only. It's just that he's not here due to some complications and something. He's not here with us today. Possibly he'll join in the next stream somewhere. So but yeah, at least हम लोग भी थोड़ा आजकल उसके चक्कर में फॉलो करना शुरू किए हैं सेरिया. तो हमारे भी कुछ जो हमारे भी थॉट प्रोसेस हैं. Let's talk about Serie as well. So Serie में what I can see is ये लीग का भी वही सीन था जो कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर था. मतलब ला लीगा का सीन था, वैसा ही इनका भी हालत था. बहुत दूर तक दोनों के बीच में जो यूवेंटस चेस कर रही थी इंटर मिलान को, और शायद यूवेंटस वे सिटिंग ऑन द टॉप, इजंट इट? Yeah. फिर यूवेंटस के Inter was This, on top. are you talking about this season? This season. Or generally? दिस सीजन ओनली ना? This season. ना दिस सीजन वो जो Juventus never went on top. It was pretty. नेवर, already- इट वाज चेजिंग समथिंग. हाँ, सो बस एक point का difference था. Yes. हाँ, There was always Juventus- a 1-2 point difference between Inter and Juve, but Juve was never on top. Juve was never, but right now as I can see in the table they are third and they still have a match to play. So ये भी बात है. But इंटर मिलान ने एक सही टाइम में उनके अंदर फॉर्म आया, उनके अंदर जोश आया कि अपने कोई सीजन बहुत तगड़े लेवल से खत्म करना है. Inter won today. So. यूवेंटस Oh, sorry, not Inter. I'm sorry. AC Milan won today. So that's how they अच्छा. actually went Yeah, on. but AC still Milan won today. the points gap between बहुत हो Milan गया and है. Inter is बहुत so हो गया. big that if they Yeah. win the next There's no few race games, only in this. There's no league. race, yeah. it's like Max Verstappen वाला, तुम ऊपर का हटा दो Yeah. नीचे का चलने दो, तो इंटर को वैसे ही कर दो. Just Inter block have Inter and then you been, can focus. Inter have been very हाँ. lethal, like the whole season. Like they have actually. Yeah, gone whatever. bad. Lautaro, Yeah, I they think, were is very the impressive. highest scorer of the league.
What a season. And Yeah. what a season they've been having, seriously. Like, And he's highest by a margin. Second yeah, is Dusan Vlahovic with 15 goals, and Lautaro Martinez 23 goals in the season. So that's a that huge margin gap. to ठीक ठाक है. That's a I huge still eight. remember Mitul saying that in the summer, the business that they did Yeah. is reaping its rewards because free transfers, getting Thuram in, and getting a few more players like on free. Now they're probably getting Serie A. So yeah, those transfers worked out well for them. Also, a very interesting story of this entire Series campaign has been Roma. So Correct. Roma का क्या हुआ कि they were lying eighth, ninth or something when Jose Mourinho left. Jose Got Mourinho के बाद sacked. De Rossi ने join किया. हाँ, sagged, left, whatever you want to say it, है ना? जैसा भी आप phrase कर लें उसको. सो उसके बाद डिरोसी आया. डिरोसी एक आध दो क्लब का ही उसके पास एक्सपीरियंस था, बट ही इज आउट एंड आउट रोमा सिंस हिज इनिशियल ईयर्स. सो ही नोज द क्लब फ्रॉम द वेरी स्टेम्स ऑफ इट, है ना. वो आया और उसने इस मतलब इस He टीम में again जान has. भर दी. What is that Rome to? What is that line? He has again risen. Rome from its Rome ashes. from its ashes. Roma has हाँ तो risen from फिनिक्स, its ashes. they're Phoenix, they're like Phoenix, they rose from the ashes. I'm getting feedback. मैं feedback बोल रहा हूँ मैं Flashback. flashbacks of those PTSD हो रहा है Roma. राजस्थानी को रोमा मेरे को has risen from its PTSD हो रहा है ashes. वो रोमा के गेम का. I don't want to talk about that. Roma have risen from the ruins. Yeah. Yeah, and they But sit that they right now yeah. sit on fifth now. They sit fifth. So miraculous recovery for them. They have lost only one game if I remember. वो कौन सा मैच था मुझे याद नहीं आ रहा. Inter. रोमा को अभी रिसेंटली ही Inter, जीता. Inter, अच्छा हाँ, Inter. इंटर से ही आ रहे हैं वो. And that was But a good what- game. That was a good game. We watched Good that game. game. And Roma Yeah. were playing really well. Roma have started playing really well since De Rossi has taken over. बहुत अग्रेसिव खेल रही है. मजा आ रहा है उनका Yes, खेल देख के, to be very that's honest. the difference. The entire gameplay has switched Yeah. into a very attacking mode. And people were doubting. See, doubt बिल्कुल होना चाहिए था. डिरोसी ने इसके पहले कोई एकदम बड़ा मैनेजमेंट नहीं किया था. ये छोटे छोटे क्लब्स ही वाज मैनेजिंग, छोटे छोटे other clubs. It was Now, yeah. it was Vishal. very much like bringing a Lampard or an Ole. Yeah. Yeah, and that working out mid-season, that's working out. So that's a bigger thing. That adds another layer to it. Because I remember at that time I was listening to a lot of podcasts, particularly my footballing podcasts are athletic. If athletic का जो football show आता है, every day they come up with their shows. So they were also discussing very highly. They also saying कि whether DOC will be able to fill in the shoes of Jose Mourinho, because Jose Mourinho was immensely loved in Rome. He was loved by the fans from each and everyone. And from there this team उसको sack किया गया. फिर sack करने के बाद DOC का appointment. और फिर उसके बाद मितुल बताता है ना वो कहानी की उसको पता ही नहीं था कि कितना पैसा क्या होने वाला. उसको बस बोला गया कि आओ ज्वाइन कर लो, तो वो ज्वाइन कर लिया बिल्कुल मुंह उठा के. उसको कोई मतलब नहीं क्या था. For De Rossi, money was never a question because he was always Roma since like childhood. So उसको पैसा भी नहीं दिया रहता था, बोला रहता था फ्री में कर लो. नहीं उसके बाद उसने जब मतलब उसको फर्स्ट टाइम मितुल ही बताता है, फर्स्ट टाइम कॉल वॉल हुआ और वो कॉल करने के बाद वो भाई साहब को बोला गया कि ज्वाइन कर लो, हम वी आर अपॉइंटिंग यू समथिंग. ही सेड ओके. एंड उसके बाद उसको याद आ रहा है अरे मैं पूछा ही नहीं हूँ कि क्या कितना पैसा क्या हो रहा है करके. मतलब जस्ट सेइंग दिस थिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी in entirety. Another very interesting story, which is pretty different to what Roma had, that is of Napoli. Napoli were the defending champions. They won the Serie A last season. Osimhen had an incredible season that season. Osimhen was firing last season, and right now they find themselves on 7th. Particularly कुछ कोच चेंजेस हुए हैं, 2-3 कोच इनके बदल दिए गए हैं इस पीरियड में. बट पता नहीं नेपली के साथ इट्स अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन दैट वन सीजन आप टॉप पर थे, यू वर एट द टॉप ऑफ योर गेम, यू आर डूइंग सो गुड, इन द नेक्स्ट सीजन यू आर नॉट स्ट्रगलिंग अनफॉर्चुनेटली. सो एक ये बहुत उनकी स्टोरी है. Manager, the funny thing is everybody expected कि after the season Napoli had a lot of players will leave. Everybody expected Osimhen to leave. Everybody expected Khvicha Kvaratskhelia to leave. But they kind of still have the main team intact. I mean, Kim Min-jae left.
But other than that, I don't see a very major change or a very main player leaving except the coach. But that actually affected them so much that they are now struggling quite a lot. So it could be one of the worst, maybe title defenses. Like you win a title last season and you finish Could in be. No, but 37th. it could be Could the be. managerial change actually didn't work. That also, na. It was who Huh. was the manager for them? Spalletti. After I Spalletti, like guess. last season, he left after last season. So Yeah, he left after the end of last season. So they tried a few coaches, but like Shreya said, Yeah, but I think Spalletti that was didn't only work the out. best for this is them. what the third coach right now in this season. Yeah, 3 coaches in one season. Yeah, it's not working out. See, Also, it sounds like a very Chelsea story. The Chelsea's jersey too. color is also blue. Yeah. They're light blue, bro. They should be ideally mimicking Manchester City instead of us. So, but yeah, another very interesting story. It's also Bologna. So if you see them, yeah, in right now in the standing, they stand at fourth, है ना? Which is very Thiago surprising. Motta. This is no, but in last 2 seasons they have actually some sort of made progress. 2021-22 they were 13th, है ना? मतलब that's still a mid-table position, good enough for them. Then eventually last season they came ninth, and now the progress is up to fourth. And जो इनके बीच और रोमा के बीच में जो अंतर है वो 16 पॉइंट का अंतर है, तो आई गेस ये इंटैक्ट रहने वाला है टू द Yeah, top एंटायरिटी. 4 सो is kind of decided. Top first is हाँ. also decided. The winner is also decided. एक second. Yeah. I'm a little confused. You are talking about Bologna versus Roma. That's a 4 point difference. Oh, sorry, I thought it was 61. Sorry, my bad. I'm really sorry for that. I don't know what I saw. I saw 67 or something and 51 something. श्रीहर्ष, थोड़ा सा आपका माइक का वॉल्यूम जरा कम करो. Okay, I'm doing it right now. पता नहीं यार इसमें अपने आप बढ़ते जाता है साला. I don't know. हाँ, अभी खैर, ठीक है. we are back. Fine. So I was just saying that मतलब that's a 4 point difference, और वो भी अभी हुआ है क्योंकि जैसे इन्होंने अपने आप को पिक किया है, जैसे रोमा ने. So that's also very interesting position they are in. I want to Bologna. talk about a big game tonight for two teams, that is Juventus Yeah. and Atalanta. Yep. There is a big game tonight between that's a big the match, third yeah. and the sixth position. So Yeah, and that's it's very not like interesting. Atalanta is Six. bad at play. And guess what, guys? Atalanta's last 2 games they've won, and Juventus have lost their last 2 games, and we have been a part of their losses as well. Because And we are उस समय से हम लोगों ने बोला है कि भैया अपन अब से तो नहीं देख रहे हैं यूवेंटस का मैच. Please accept our humble apology letter that we will not be watching Juventus अपन games. नहीं, हाँ. After constant complaints of not watching Italian games, now we have given up on watching Juventus games because we have made them lose. So all Yeah. the best tonight. और हम लोग बहुत सुपरस्टिशियस हैं. बीइंग अ फुटबॉल फैन हम लोग बहुत सुपरस्टिशियस हैं. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट. बट कैरिंग ऑन दिस डिस्कशन, यहाँ पर मतलब इट्स वेरी मच क्लियर. नीचे में भी नीचे में कौन है भाई? Frosinone, Sassuolo and Salernitana. Salernitana is obviously they are going out possibly. Sassuolo is a big Sassuolo is a surprise. big, very big surprise. Salernitana is having as bad a season as Sheffield United. If you see, 2 wins, 8 draws, 18 losses, 14 points from 28 games. It's as bad as Sheffield United. So Burnley. You mean Guys. Burnley or Burnley. Sheffield? A really interesting thing that you have to see: 13th और 19th place team. 13th में वेरोना है and 19th में ससूलो है. इन सब के बीच में 3 पॉइंट का गैप है. And some very interesting team, let's say, is there. Empoli is there. Empoli ने Juventus को हराया था, if I remember, Udinese एक also, आध I मैच think. में. अभी Udinese is also there, जो Imagine 17th में sit कर रही the है. teams that have beaten Juventus are fighting for relegation at this point. So they are trying their bloody best कि हमें तो जीतना है और पकड़े यूवेंटस को, और वो भी हमने वही मैचेस देखे. मतलब यहाँ पर आपको हो सकता है टॉप की रेस उतनी स्ट्रांग नहीं दिखेगी. हो सकता है कि 4th पोजीशन की रेस थोड़ी सी टाइट हो सकती है आगामी जाकर, पर नीचे की रेस इट विल गो डाउन द वायर. बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, एंड आई गेस यही वीक है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस थे. सी Sassuolo played Frosinone this week only. The game is going on. No, it has happened. हो गया है मतलब. Cagliari played Salernitana, है ना?
और लेचे प्लेड वेरोना, सो बहुत नीचे के मैचेस में बहुत टाइट मैचेस हुए, एंड लाजियो और उडिनेसी का मैच अभी होने वाला है जो कि 12 तारीख को है। तो ये लीग का जो रेलीगेशन बैटल है, इफ यू टेक आउट सैलर्निताना, दोनों टीम का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 18th और 19th में कौन बचने वाला है। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्ट, दिस लीग इज वेरी ओपन इन द नीचे वाला पार्ट, relegation side. Yep. रेलीगेशन पार्ट। ऑल्सो वहां से पार्मा आ रही है सेरिया बी से, जहां तक मेरे को जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि मितुल वाज सेइंग कि पार्मा इज डूइंग वेरी गुड आउट देयर, एंड पार्मा वहां से जहां तक उठ के आ रही है इस सीजन, हो सकता है, देखते हैं। बट दिस इज सच अ इंटरेस्टिंग गोल हुआ क्या? नहीं, नो 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 Nothing, बच nothing. गया। Right. असल में क्या है ना, दिस स्प्लिट स्क्रीन थिंग इज एक्चुअली मैं कभी यहाँ देख रहा हूँ आप लोग को, कभी मैं अपना कैमरा देख रहा हूँ, कभी मैं इस मैच को देख रहा हूँ, 3 जगह मेरी आंख चल रही है अभी। बट खैर, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ये हमारा 2 बहुत अच्छी लीग्स, वी हैव कवर्ड इट अप। अब एक तीसरी लीग, जिस लीग जो ना बदनाम है, वो लीग फार्मर 2। ओके, यस, सॉरी। Osani, हाँ, FPL Farmer captain 2 is as in- Bundesliga. I should not be watching any games where my captain plays live. who's your captain this week? Haaland. Haaland. अरे Haggu Can Haaland. can't you should tell me that before so I wouldn't I captain have him. been advocating. You don't listen to me. I have been advocating this since last season. Like any match I watch of my captain, they screw up. But I think that's the problem with Haaland. Like big games, he doesn't. Yeah, yeah. Thank you for calling Chelsea City also a big game. It is a big game. So But I get your point. I was discussing about जो एक लीग जो बहुत बदनाम है, बायर्न लीगा के नाम से, हम उस लीग के बारे में बात कर रहे हैं। और इस टाइम इंटरेस्टिंगली, दिस इज नो मोर बायर्न लीगा, दिस इज एक्चुअली हीटेड, this is Bundesliga. It has retained its name, value, its prestige. ये थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आया यार, वरना ये तो लीग तो डेड ही होती थी। हाँ, पिछले सीजन भी मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए लीग डेड होती थी। पिछले सीजन में तो जो एक कंट्रोवर्सी थी, जिस तरीके से डॉर्टमुंड ने फंबल किया था, हाँ, आखिरी डे में हगा था बहुत गंदा, तो उसके बाद आई कैन नॉट से कि इट इज ऑलवेज अ बायर्न लीगा, बट व्हाट आई कैन से इज कि ये बायर्न से बहुत हाईली डोमिनेटेड लीग रही है, बायर्न म्यूनिख से। और उसका हम यहाँ पे एकदम एंटीथेसिस देख रहे हैं, that Leverkusen managed by अरे क्या नाम है उसका, मैं हाँ, Xabi Alonso, मैं भूल गया, मैं वो एकदम वो जैसे ट्रेल ऑफ थॉट्स होता है ना, वो भूल गया मैं थियागो मोटा में अटका हुआ हूँ वहाँ पे। Yeah, Xabi Alonso, one of the very interesting character in football, and also उनका अभी 7 साल भी हुआ रिटायरमेंट लिए, वो उनकी पोस्ट को everybody was sharing लास्ट अभी रिसेंटली, कल ही परसों पे ही हुआ वहाँ जहाँ तक। So Xabi Alonso, he is managing the club as he is managing the club beautifully. Leverkusen right now sit on the top with 64 points, 1 game in hand and a 7-point lead from Bayern Munich. So that is an incredible league considering कि यहाँ पे zero losses. हाँ, that is also a thing. They have not lost the game. They have drew 4 times, but they have won. League, but also in cup competitions, like in the हाँ, European Pokal, competition. DFB Pokal वगैरह and all, everywhere. In the Yeah. European competitions also, Europa, they have not lost a game yet. Leverkusen are managing it beautifully, and Xabi Alonso, क्योंकि obviously अभी बहुत सारे rumor. I can't believe Yeah. Kai Havertz यहाँ से आया, हरामखोर। ऐसा बोलोगे तो टीमो वर्नर भी मतलब इसी लीग से आया है, तो but Kai was a Bayer Leverkusen kid since long. Product. Yeah. He was. Yeah. So, but still, if you look at the league, ये लीग बहुत ज़्यादा लेवरक्यूजन डोमिनेटेड है। इन्होंने हर स्टैट में, इवन के टॉप प्लेयर भी देखो, हैरी केन ऑब्वियसली आप वहाँ गए हैं, तो आप वहाँ पर अगर अपना वर्चस्व नहीं जमाएंगे तो कहाँ जमाएंगे, जब आप and you used to score that many amount of goal even in when you are not having good season in Premier League, आप तो यहाँ पर you have gone to a sort of a farmers league which used to be, अब मैं नहीं बोल सकता अगली बात ऐसे से, तो यहाँ पर he's kicking in all, he has made some 30 goals,
असिस्ट में ऐसे साने आगे हैं, बट मतलब 30 goals and he's the मतलब एवरेज रेटिंग आल्सो, ही इज आल्सो एमवीपी इन एंटायर स्टफ्स एंड ऑल. अभी बहुत अच्छी थंपिंग विक्ट्री इसी हफ्ते इन Yes, लोगों ने रजिस्टर yes. करी है. 7-1. 8-1, 7-1, 7-1. 7-1, 8-1. 7-1. No, the last goal was called off due to VAR. They scored, but they scored another goal after that. अच्छा, they scored, तो 8-1 is the score line. 8-1. भाई 8 God. अगर सामने वाला टीम एक और गोल मारता तो वापस मुझे पीटीएसडी होता था. 8-2, 8-2 का दर्द हम जानते But I'm हैं. glad they didn't. Yeah. No, it's been hard for Bayern, man. Like Bayern have literally lost the battle and lost the cause because thanks to Tuchel Ban, but thanks to that haram ball he's been playing. But yeah, I've like I've I've heard a small thing that Tuchel, I think, injured his foot again. I'm not sure, but I think I heard news that he injured his foot. So whenever he's injured his foot, दो टीम का अच्छा फॉर्म आ जाता है और वो चैंपियंस लीग जीत जाता है. this I have not even heard of. So I have this happened with Chelsea. So people are saying Bayern Chelsea- might go and win it. भैया ये वही सीजन था जब रमादान करीम वाज नॉट इवन एबल टू परफॉर्म अच्छे से, है ना, और उसमें अपन ने साला उनको हराया था भाई. मतलब Yeah. ये वही सीजन की बात कर रहे हैं अपन उस वाले. But like finally Bayern is getting into form, but maybe too It's late. too late. 7 points is a Too late. it's और वो a, 10 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है. अभी हु आर दे प्लेइंग, लेट मी सी, ये खेल किसको रहे हैं ये बुंडेसलीगा में. एक मैच बचा हुआ है ना इनके हाथ में. इफ आई कैन सी, दे आर प्लेइंग वोल्सबर्ग एंड वोल्सबर्ग सिट इन 13th 30. and that's a home game, Leverkusen. तो I guess ये हो जाएगा इनका 10 पॉइंट का लीड अभी भी no, I think the most surprising team in the top 4 is Stuttgart. Stuttgart. I didn't expect Stuttgart to do that well. Yeah. Leipzig is not doing good. Frankfurt is not doing good. Yeah, Leipzig is not doing Leipzig is good only. मतलब what do you expect? They're fifth. Imagine teams like legacy teams like Mainz is doing horrible. Mainz is in the relegation zone right now. Relegation zone, yeah, they are definitely getting They're relegated. definitely, मतलब yeah, in that Mainz position. has not relegated since long, right? Yeah. Weird season Yeah, since for- very long. They were last relegated, if I can see, 8-9 सीजन में इनका पिछले बार रेलीगेशन हुआ था. तो ये करीबन 16 साल बाद नीचे जाने वाले हैं if things remain the same after the end of the season. So I think the team on 11th, this is the first time I'm looking at their name. Heidenheim. Heidenheim, yeah, me too, bro. Very interesting. ये कौन सी टीम पैदा हो गई, bro? ये क्या है मतलब? And they're doing decent. They're 11th. 11. 11th. So I'm surprised that a team that's come from like इनको 2 साल हुआ है. ये इनका फर्स्ट साल है, सॉरी, इनका ये फर्स्ट साल है. Because I know all the other, at least the names of all the other teams in that team. But Heidenheim is something different. Heidenheim is something I have not heard. Interesting. मैं Probably बोचुम trying भी नहीं to- जान रहा हूँ. बोचुम भी नहीं जान रहा हूँ. Bochum, Bochum I know. You know because of FIFA, but yeah. अच्छा. And you know, one of the inspiring story of the last season, the Union Berlin, that sits right now in 14th. Yeah. उनकी भी हालत खराब है इस सीजन. इन्होंने भी अभी बहुत रिसेंटली ही ऊपर आए थे, 2-3-4 साल पहले ही आए But थे last ये season, ऊपर. yeah, last season they were absolutely rocking it. Oh, I think, ओह yeah. I think Liverpool का problem is they don't have their Salah. usual Salah. they don't have Salah. They don't have Salah. तो दे मतलब उस स्क्वाड में भी नहीं है क्या? No में Salah. नहीं है. No खत्म, Salah, no खत्म. Trent. खत्म. Because Salah I is heard there on the Salah will be bench. back. No, he Salah will is be there on on the bench. He's in the bench, acha. But ये Trent is देखो, not on the bench also. फेक न्यूज फैला रहा हुआ. And the United fan is doing it. Wow. हाँ, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ ब्रो, सब देख रहा हूँ मैं. But we one thing know- that I we do know want you to did. talk about this Bayern Liga tag. There is a reason there's a tag for Bayern Liga because again एक season खराब चल रहा है and there's a good chance that they might lose the league. But they are the front runners to get Xabi Alonso next season. If you get Yeah, Xabi very much Alonso, possible. And this is I mean there's an 80% chance that they will also pick up the best players from Leverkusen also. That is Frimpong, guys.
हाँ जेरेमी Jeremy फ्रिम्पोंग Frimpong. They just might take Frimpong, and this entire 50+1 rule that goes on in Bundesliga has made Bayern dominance so clear, especially for German players, because this is entire thing, right? That to play in the German team, if you are in Bayern, it makes your life easier to play in the German team. So ट्रू थिंग that's why the league is set up for them to win, kind of. बहुत इंटरेस्टिंग फ्री किक थी, थोड़ी नीचे थी, Yes. लग सकता yes, था, the हो free सकता kick था was कुछ भी, बट interesting. आई गेस फर्स्ट हाफ हो गया कंप्लीट. हाँ यस इट हैज बीन. सो अब क्योंकि हमारी हो गई डिस्कशन 3 बड़ी लीग्स की, एंड आई होप यहाँ पर अब थोड़े लोग इस स्ट्रीम पर आए क्योंकि मैच चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप नहीं आ पा रहे हैं. आप अगेन आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इन, जैसे पाइप बॉम्ब ऐसे स्प्रिंकल कर देता हूँ दैट अगर आप कहीं से पहली बार इस स्ट्रीम पर आ रहे हैं कहीं से भी, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस, लाइकिंग दिस वीडियो, लाइकिंग ऑल ऑफ आवर अदर वीडियोस. जाकर देख लीजिए, थोड़ा सा मतलब भला ही हो जाएगा हम लोगों का, गरीब लोगों का. और हो सके तो, और हाँ ये जो बेल आइकन होता है इसको दबाना मत भूलना, कभी मत भूलना प्लीज. अगले बार मैं ना ऐसा करूंगा, ऐसा शर्ट में बेल आइकन बना के आऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्राइब के साथ साथ. Guys, वैसे भी हम लोग, remember, we've got proof now. नहीं होता है तो we know what to do. अरे अब यार ये डोंट गो वेरी लिटरल यार ओसानी यार, कम ऑन, इतना लिटरल नहीं जाने का ना भाई, मतलब. बट क्या, लेट्स क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं अब प्रीमियर लीग के बारे में. अब ऐसा है कि हम में से जो हम यहाँ पे एटलीस्ट मेजॉरिटी जो बैठी है, ये प्रीमियर लीग वॉचर बहुत क्लोजली देखती है ना. हमको तो टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है, टेबल ऐसी रखो जो कोने में, जो हम दूसरे टेबल देख के चल रहे थे, Yeah. टेबल भी देखने की Yeah. जरूरत नहीं है. Out of अभी एक I हाँ. just want to add, out of all the 4 leagues we kept PL at the end because एक तो हाँ मैच चल रहा है. Second thing, title race is actually on big time only at Premier League, only in Premier League. डिस्कनेक्ट हुए शायद इनको, Sorry. I think there was a थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ था. नाउ यू गाइस आर बैक. I think you're Yeah, no. So I was saying that I don't know कोई सुन पाया है नहीं. I was saying that we left PL for the end only क्योंकि the race is actually on in PL for the title. क्योंकि there is only a 1 gap difference between the top 3 teams. That is right now at top Arsenal. Second में No, as of now. if As you of look at now, the live City. table, गेम City on top. वीक के पहले का बात कर लेते हैं गाइस. ये गेम वीक के स्टार्ट होने के पहले तो 1-1 पॉइंट था, ये हम लोग वो लेकर चलते हैं. So City right now is on top with 65 points, Arsenal Live. on 64, and Liverpool on 63, 63. as things stand. If the goals, If the If yeah. the result it's stands. like this. मतलब ये लीग बहुत सालों बाद इतनी खुल रही है. पिछले वाले में बहुत सालों नहीं. पिछले सीजन भी लास्ट सीजन आर्सेनल Arsenal till some time. But बहुत even देर the- तक. No, but even the season before that, it was a last match thing between Liverpool and City. Last match तक गया था. अच्छा ओके, थोड़ा सा मैं क्या है ना, याददाश्त बूढ़ी हो रही है, मैं इसलिए मैं भूल रहा हूँ. But what we can definitely say is, it's always been a two Horse teams race. fighting for the title, 2-horse race. अब After 3 हो that, गया. It's 3 teams. Yeah. Yeah, that is very interesting. Give और Arsenal some time. It will again turn into a 2-horse race. Give Hey, them, यार, give them a few games. तूने जिंक्स कर दिया ना, मतलब पक्का इस बार आर्सेनल उठा के लेके जाएगी. No, Nah, please. they are not taking it. It is probably going to be Klopp farewell season. Might be him. No. As a Chelsea fan, I cannot see Arsenal lifting it. हाँ, But तो as a वैसे fan तो- of वैसे तो तीनों भी उठाए तुमको बुरा लगेगा. नहीं, अरे क्यों, हमको सिटी से क्यों बुरा लगेगा? मतलब ठीक है, हमारा है उनसे भी लफड़ा है, राड़ा है हमारा उनसे भी, है ना. लिवरपूल से तो अभी इतनी गंदी हार देखकर आए अपन उन लोगों से. बट एज ए चेल्सी फैन आई विल बी वेरी हैप्पी इफ ईदर लिवरपूल और सिटी लिफ्ट्स अप, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास दूसरे जो आर्सेनल को ट्रोल करने के लिए पॉइंट्स तो बचेंगे ना. हमको इतना ट्रोल करते हैं, अभी इतना ट्रोल हो रहे हैं, हमारे पास बचेंगे तो थोड़े कुछ पॉइंट्स. बट ये बायसेस असाइड, बायस तो बहुत ज्यादा हूं मैं अपने क्लब के लिए, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता. बट ये लीग अगर आप इसमें देखें तो मतलब हर वीक अभी जो सिचुएशन है राइट नाउ, आर्सेनल ही टॉप पर रहेगी, क्योंकि जीडी में भी आर्सेनल ही टॉप पर है लाइव टेबल के हिसाब से. दे हैव अ Live table पे City is on top. Live table पे City is on top. अच्छा
सिटी ऑन टॉप हो जाएगी, यस, एंड सेकंड विल बी Arsenal. आर्सेनल, है ना, बिकॉज ऑफ द जीडी स्टफ एंड ऑल, है ना, No, चेल्सी एंड no, द फैंस थर्ड के लिए 1 point चेल्सी because फैंस Arsenal one won point yesterday. अरे My सबको bad. एक एक पॉइंट है श्रीहर. 65 My bad, City, my bad. 65 City. Shriharsh, you know what top of the table feels like, right? Or no? Sorry, you don't. सी हाँ. ये तो अभी अभी हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, जब होएगा ना तो तेरे घर में मिठाई भिजवाएगा, बिल्कुल इतना याद रखना तुझे, I'm है ना, waiting अगले for अगले that सीजन, moment. डेफिनेटली इंडीड, So अपना पता लिखवा के जाना, ठीक है, 64, 63. Okay, continue. yeah, something 64, 63 is City, Arsenal and Liverpool. So Arsenal का plus point actually this season is they have learned how rigorous they have to be and how on the go they have to be with each and every game. They cannot sit back in every game if you want to win the league in Premier League or in any league. So Arsenal have actually done well in that department. They're also playing two other competitions, that is the UCL and the FA. and it is also sort of beneficial for them, for Arsenal. See, they are trailing 1-0 to Porto, और हो सकता है कि पोर्टो को वो हरा भी दें, उनके घर में ही मैच आ रहा है अभी चैंपियंस लीग का आगामी इस हफ्ते में आने वाले, बट अगर आप तीनों टीम में देखें तो सबसे ज्यादा फ्री शेड्यूल में क्या बोलते हैं, आर्सेनल का ही है ना, I was going and to say their schedules and their upcoming games are very easy. very easy, they don't have to play any top team or something, है ना, वो नीचे की टीम ही खेल रहे हैं क्या, No. they are हाँ, somewhat. The one more good point is City's GD is 36, Liverpool's GD is 38, Arsenal's GD is 46. एंड So ये their पिछले GD पिछले is 3 गेम में, पिछले 5 या पिछले 7 गेम में हुआ है ये, सबको. So they know that if they stay on the same points, at least GD से उनको advantage रहेगा. Yeah, Arsenal has So done that is well one that. point. They needed बहुत 5 interesting. goals, 4 goals, 5 goals. And I think where Arsenal did improve from last season is just the idea of backups. That one Saliba injury ruined their season last season. This season they have recruited very shrewdly, where they have gotten proper backups in places that they need. The addition of Declan Rice. They also had another backup who's injured and who barely played. That is Julian Timber. Julian Timber, sadly enough, yeah. I mean, sadly enough for Arsenal, barely played. Kai Havertz, for all purpose, has been playing great. I mean, after the season that he was having at the start of the season, first half of the season, he was as horrible as one would expect him to be. But he has stepped up his game, and he has been scoring. He has been putting in his shift. I mean, putting in shift is something that we all expect of Kai Havertz, but he has been converting those chances very well. He has been Even I think one more addition to that is Jakub Kivior. He's also Yeah, been a Jakub good addition Kiwior, to the correct. team. Good They don't addition. have a proper left back. I was told by Mittul that he was a left back only. So I think his addition to the team has been like helpful. A tall left back, so that's what you need. Yeah, Zinchenko, in Zinchenko's absence or whatever, these extra additions have been very, very helpful. What Arsenal, the only thing Arsenal are probably, I mean, even though they are scoring 4-5 goals, but just an addition of a striker to score in those games where it's very, very hard to score those goals. An addition of any kind of a striker will be like the final piece, final piece of the jigsaw. Even without Jesus and Nketiah, this is what they can do. Yeah, With- exactly. I was with going to say Jesus. that they already have Jesus and Nketiah. Why do they need a lethal Because striker? Jesus is not. He's somebody not a who proper wins number you a 9. league. Jesus is definitely not someone who wins you a league. But He they could can- have actually made Nketiah more available. I don't know if he's injured half the time or not, but yeah, that has been the story of Arsenal. But let's come to City, man. City, I think nothing new for them to not win the league and all, but they are struggling against a few they have struggled in a few games this season, and I don't think it's because of injury also. It's not even because of injury, it's just because other teams have actually bowled them over in few of the games.
How But happy you are. K- How happy you are because Chelsea is one of those teams. yeah, at least we didn't lose against them. No, I'm not like that happy. So whatever. So what I can see in the performance graph of Manchester City is कि इन लोग 14th गेम वीक जो हुआ अराउंड व्हाट दैट 14th गेम वीक इज इन दिसंबर है ना दिसंबर में ये फोर्थ हो गए थे है ना एंड दे कंटिन्यूड बीइंग फोर्थ फॉर लाइक 14th 15th 16th 17th तो 3-4 हफ्ते तक ये फोर्थ रहे तब इनकी जो ऐसी जो टाइटल एस्पिरेशंस थी ना थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी और शायद उसी के आसपास ही केविन डी ब्रुयना का Yeah. रीइंट्रोडक्शन वापस I हुआ was just going to इंजरी talk से वो about रिटर्न that. हाँ. या केडीबी केम बैक एंड केडीबी एक फैक्टर है आप चाहे इस टीम को यू नो दिस टीम हैज अ लॉट ऑफ विनर्स है ना Yeah. और इसके पहले भी ये गेम वीक 11-12 में देवर नंबर 1 साइड है ना और उसके पहले भी मतलब शुरू में भी शुरुआती जो गेम वीक्स थे 3rd से लेकर 8 तक देवर द ऑन द नंबर 1 टीम बट इस बीच में जो स्लम्प आया था ये था क्योंकि आपको एक जो कंसेक्यूटिव आपके लिए परफॉर्मेंस दे सके क्योंकि केडीबी का कोई भी जो एक जो इम्पैक्ट होता है वो होता है टीम के लिए गोल्स बनाने के लिए टीम के लिए क्रिएटिव प्ले क्रिएट करने के लिए और वो आदमी जब फुल टाइम जब वो वापस आया तो उस आदमी ने अपना महत्व बताया इस टीम के अंदर कि भैया मैं हूँ मेरा ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं समझने का मेरे को ना अपना मतलब है यहाँ पर टीम Yeah, surprisingly, Grealish has not worked out for Man City, and that is visible because he's been injured also. Yeah. But yeah, I don't know. Grealish to Man City was always a weird. It was like a second Calvin Phillips moment. So like No, you can see what City is doing even right now. Like even that De Bruyne corner, yeah, that was smart, and he's Yeah. showing his presence after the injury. Like 3 or 4 games continuously, I think he had assists or yeah. Not goals. every player comes back well from their injuries, but good for KDB. You know better because you've got quite a lot of players that come Exactly. back from injury. Exactly. But Yeah. I will be back. even the teams, but if we talk about relegation side in PL also, Everton, what a story. I mean, from a 10-point deduction to now 6 points deduction. 4 games they got, 4 points they got back, and that has actually changed a lot for them because did you deduct the 4 points from? I mean, just deduct those 4 points again, and they are back in the relegation zone. They are now safe from the relegation zone by 4 points. To a point, also that I should mention that Everton has not won any match in 2024. And we're in March. That's very interesting, man. And they were showing some जब उनको 10 पॉइंट का जब डिडक्शन हुआ तो उनके अंदर अचानक से एक आत्मा आ गई and they were performing really good ना उसके बाद They कुछ won matches में. so many games, but they have been That's very interesting. in a weird run of forms where they have lost half the games, drawn half the games, but it's I think 12 games, including the United game. It's 12 games that they have not won, and not like all were very tough teams. There were easy teams also that they faced, but 12 games, like that's almost the all the teams that you've faced. Exactly. अच्छा एक जो स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है मुझे लगता है इसके बारे में बात होनी चाहिए इस पूरी मतलब टीम वाइज दैट इज बोर्नमथ स्टोरी बोर्नमथ की है ना बोर्नमथ ने 9th गेम वीक में दे वर 19th है ना और उस वाले गेम वीक को दे वन अगेंस्ट वुल्व्स सॉरी दे लॉस्ट 2-1 टू वुल्व्स उस गेम वीक को हारने के बाद इस टीम ने उतने नीचे तक आने का कुछ नहीं किया दे हैव मेंटेन देयर प्रोग्रेशन मैं उनके परफॉर्मेंस चार्ट को देख पा रहा हूँ सोफा स्कोर में तो इनका एक छोटा सा मतलब लगातार इन्होंने अब मैं देख पा रहा हूँ गेम वीक 9 के बाद से थ्रू आउट अभी तक जो गेम वीक 26, 27, 28 है इन्होंने तहलका मचा दिया है भाई आपने मिड टेबल का सिचुएशन आपने मेंटेन रखा है कल भी दे वर लूजिंग टू शेफील्ड बाय द वे 2-0 इन लोग हार रहे थे गंदा है ना एंड आई वाज वाचिंग दैट गेम and I was like भाई ये तो मतलब and we saw what annihilation like a week back we all of us we were connected on clubhouse हाँ Arsenal versus Sheffield 6-0 5-0 तो पहले हाफ में हो गया था 4-0 5-0 है ना बहुत गंदा हारी
and that was a home game और उन लोग के बेचारे उनके फैंस के चेहरे देख के बहुत खराब लग रहा था Fans as left a by half time, yeah. But कल ही के मैच में this same team and those same player, you know, Boyle and you know a lot of other names, they were performing very well. And I was like, क्या इनके अंदर अवे का अच्छा दे अच्छे से खेल पाते हैं, ऐसा कुछ है क्या करके. But eventually कैसे करके भी बोर्नमouth ने draw कर लिया इस मैच को 2-2 they drew and at their home. But still that is one of the good stories. The other conflicting story to a City thing. सिटी और एस्टन विला को आप एक दूसरे के मिरर इमेजेस के रूप में यूज कर सकते हैं इस सीजन में. जिस टाइम में सिटी का स्लम्प आया था फॉर्म में, उस टाइम में थोड़ा एस्टन विला भी स्लम्प आया था उनके फॉर्म में, है ना. और उसके बाद उन लोग एकदम इन्वर्स हो गए. सिटी इज नाउ ऑन द राइज और अभी वो नाउ एज ऑफ द लाइव टेबल दे आर नंबर 1 एंड एस्टन विला फोर्थ में ही अटक के रह गए. एंड आई डोंट थिंक सो. गाइस डू यू थिंक? हाँ बताओ. The fun fact is they lost to Tottenham today. And not lost. They got 4-0. humiliated. Battering. They got That's humiliated. a battering, bullying. 4 And red at carded. home. They lost at home. Yeah, I'm so surprised how what Ollie Watkins, Douglas Luiz, McGinn, Konsa, Cash. McGinn was red carded. McGinn was red sent off. carded. McGinn was He Sent was off. sent off. Oh my god, I don't want to open my FPL. So Different priorities. Yeah, very different. I mean, but we have to talk how well Aston Villa had been doing the whole league. No, they had a purple patch, I think, Yeah. during like the Yeah. middle part. Same like Like, Coco. like दिसंबर वाले पार्ट में दिसंबर के पहले थोड़ा सा उस पार्ट पे they were having a purple even patch. they've been, I think, hit with injuries and like suspensions to, I think, major players. That is what is affecting their, I think, performance, because Ollie Watkins is still doing 16 goals and like the league is not a joke for Aston Villa. So I think he's doing well, but overall the team is not performing. और फिर चेल्सी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता बट हाँ यू गो अहेड विशाल. Bishal, okay, fine. So, yeah, so it's not been a great season, obviously, for Chelsea since the beginning. Now we are sitting in the second half of the table, which sucks, but I'm kind of over it because I have given up on us going anywhere above. I would just like to see better results in the upcoming games. मतलब I am actually happy कि good for us with this team. We are not going to be getting any extra matches because this team needs to first perform in the basic league itself. उसके बाद ही UCL जाना because like it's just not working out well. And कहाँ से UCL कहाँ से अभी we UCL don't दूर है see भैया. Ls, we only see Ls. UCL. Wow. हाँ wow. Wow. She is killing with her बहुत सुंदर माहौल बना देगी. Only we see Ls. But why we are saying Chelsea 11th and 10th place FC? We are हमारा नाम बदल दो हमारा, खत्म करो हमारे नाम को. Yeah, let's see how Game long we week- survive there. I mean, गेम not वीक survive. 7 से श्रेया गेम वीक 7 से हम लोग that's a very bad tackle. That's a pen. That's a pen. That's so Ederson, bad. yaar. This Shoot, is like yeah. writing history for Klopp, which is what all the fans will say. Shreya, This is not a good guess, history. guess what would have happened at halftime? Klopp गया रहेगा ना इनके पास रेफरीज के पास पेनल्टी दो. बट वो बहुत गंदा टैकल भी है ना अगर One देखो second, तो. one second. Oh, That was on earth was Ederson is ये Ederson? such a ये clown, ये bro. this is a pure चूतियापा. This is a pure चूतियापा bro. Ederson is How such a can you clown, miss? bro. What an I'm asshole! not- What an I'm idiot! not- Like I'm who sorry. does this in a huge game? कुछ भाई दिमाग हाथ नहीं लगाना था. हाथ तो लगाना चाहिए था. चूतिया ने पैर से क्या मार रहा है उसको, क्या लगता है क्लियर कर देगा क्या? चूतिया है क्या? Excuse me. Yes, okay. अरे कहाँ से Why? आके he's in Ederson's No. team. Oh yeah, I'm sorry. हाँ कैसे लेगा? I'm sorry. इस श्रेया ने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया था 2 सेकंड के लिए भाई. ये तुम्हारे चेल्सी प्लेयर्स को तुम पेनल्टी लेने मत लगाओ. Hey, shut up, man. I don't even take him as a Chelsea. ये एक्स चेल्सी ना, अभी बहुत पुराना चेल्सी हो गया ना, अब वो चेल्सी नहीं रहा. Chelsea player भाई But मतलब. wait, one question. एक How second, but was that लेगा not a actually red? लेगा कौन लिवरपूल के लिए?
Show was How like. was it not a red? Show was like. That was a red. Could tackle, right? that should have been red. I feel so. ये Yeah, it red should have होना been a चाहिए red. था. It should have been a red. It's a very soft yellow. So Because the if- point is, if it Why was me any check? outfield player, it would have been a red just because it's No, a no, no. goalkeeper. But they if you didn't see use. नहीं. McGinn's tackle, McGinn's tackle was also without the ball. He also Actually, tackled Nunes without the also ball. jumped a little. Nunes did jump a little, Nunes did. but the point is, if it was any outfield player, this would have been a red because last player. But I think just because it's goalkeeper, they've given a yellow. Why are they अरे showing यार, Ake? but- Was it Ake's fault that he couldn't cover? He couldn't. Probably. Probably his back pass that caused it. Yeah. हाँ, हो सकता है वही होगा. बट मैं चेल्सी का बोल रहा था, जैसे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा अपना इलाज ले रहे हैं. चेल्सी गेम वीक 7 से 11th 10th 11th 10th 11th 10th खेल रही है. अभी हम 28वें या 29वें गेम वीक में हैं, इफ आई रिमेंबर. क्या गेम वीक है ये? मुझे याद नहीं आ रहा. 28. 28वां गेम वीक है. हम 21 गेम वीक से 10 11 10 हम 9 में आए नहीं हैं. वी हैव नॉट इवन एंटर्ड टॉप 10. टॉप 10 में भी हम 10वें पे अटक के बहुत टाइम 10वां फिर 11वां फिर 12वां फिर 10वां 11वां. भाई इस टीम का नाम चेंज करो. 10th place 11th place FC करके खत्म. You know that I will Just do like if we are second next season also like this only. अगर जैसे आर्सेनल को बोलते थे ना फोर्सनल बोलते थे पहले. दे यूज्ड टू फिनिश अ लॉट ऑफ फोर्थ एंड अंडर वेंगर दे हैव टेकन सो मेनी फोर्थ इन देयर एंटायर. उनका अगर आप देख लीजिए ग्राफ तो I think हमारे साथ भी McAllister वही will take कर. the pen. Yeah, McAllister looks It's Yeah. it's good that you're manifesting your team to be called that. So yeah, I'll also manifest it. हाँ, ठीक. Keep manifesting, bro. And McAllister last 5 back penalties were pretty good. I must say he has scored all of all it. the pens. Let's see what happens. Is it going to be an equalizer? Bola. Look at the City fans. I hope City don't get. Seriously. Because you know, They are I saying said that this. I want Liverpool to score the pen. Oh. And they did. Yes. Ooh, So- he went into the right direction. Shit, goal. So now It's they have a draw. equalized, guys. Liverpool. won. Arsenal fans are happy. City. Arsenal fans are happy. Yeah, Arsenal fans would like to take this result. Stop the match. Stop the count. Stop the count here. For So Arsenal Shriharsh, now your table is correct, where Arsenal is on top. Yes. अरे मैं असल में क्या हुआ था, मेरे को लग रहा था फर्स्ट हाफ में कि ड्रॉ चल रहा है मैच एंड आई वाज द Oh, रिजल्ट. you were not counting the City win. Okay. But meanwhile, I mean, given that we spoke about Chelsea, just a word on United also. Oh yes, winning all games as Sixth. usual, but always. But I mean, it's such a funny thing that it's kind of cemented those places because Aston Villa and Spurs are fighting for that fourth UCL spot. Given the situation right now, PL is not getting the fifth UCL spot. So in that case, this top 4 race between Aston Villa and Tottenham will really get interesting because Manchester United is now 6 points behind Spurs. एंड देन वेस्ट हैम इज 4 पॉइंट्स बिहाइंड यूनाइटेड. तो अपना उधर यूरोपा वाला स्पॉट मस्त एकदम फिक्स हो गया. तो अपन ना इधर के ना उधर के मस्त रुके हुए हैं यूरोपा में. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग विन yesterday with 2 penalty goals, both gained by I love it how Garnacho. Shreya's just going like I'm sick of this team. I fucking hate this club. I hate it. Just sucks. Okay. yes. But yeah. I'm not Bishal. even sad that we are not anywhere close, but it sucks that they are 6th. It sucks. I सही just बात have to है, live सही. with it. सही बात है. बहुत सही बात आप बोल रही हैं. Yes, Bishal, you were saying. हाँ, No, you're saying. but the no, but yeah, I mean, good win yesterday. Both penalties scored, one by Bruno, one by Rashford. Everton, again, same thing about Everton. Everton yesterday had so many chances. I think again that was a game where Everton had more than around 20 chances, if I'm not wrong. Let me quickly get that stat. Yep. Everton had 23 shots yesterday and could not score any. So that is where Everton is actually lagging, and not like I mean, Onana had a decent game because Everton did have 6 shots on target,
out of 23, 6 shots on targets only. There are so many that they have missed. That is probably where Everton is missing the next level part of it. DCL is of course was injured for a while. DCL came off the bench yesterday. And Oh, was not yesterday good. was very surprising. Pokemon apparently came off the bench. You should be knowing Osani. Which Pokemon? For United. Andre Gomez was back. Andre Oh, Gomez. Oh my God, he still plays for your team. Yes. Yeah, he still plays for Everton. surprising. Okay, guys, Ederson is coming off. अच्छा एवर्टन ही plays for, all right. मेरे को लगा कि इनके Ederson लिए is coming off the pitch. He's if I injured. remember he was with United now for a very long time. No, he was Barcelona. never. Barca. Okay. Barcelona, yeah, Barcelona. Andre Gomez, for anybody who doesn't remember, is the same player whose leg was broken by Mr. Hyun Min Son. Yes. Yes. But yeah, a very Also, interesting match. if people remember the El Clasico where Messi scored that goal and like his jersey was, he Yes. was a crucial part in that goal. Correct. He was a part of the goal. But who remembers? Who nobody remembers. Because at the end of the day वो गोल कोई रिमेम्बर करता है और वो ऐसे शर्ट को रिमेम्बर, वो फोटो को रिमेम्बर करता है और कुछ नहीं रिमेम्बर होता उसमें. Barca fans remember. तो बार्सिलोना फैंस ना ब्रो, नॉर्मल फैंस भी नहीं जान रहे, याद ही नहीं है. देखो हमको तो याद ही नहीं था ऐसे सब कुछ सिटी हुआ था. फैंस, सब सॉरी सिटी प्लेयर्स जाके एडरसन को शायद पूछ रहे हो कि भाई और थोड़ा नहीं खेल पाएगा क्या, और थोड़ी देर में खेल ले खेल यार, पाएगा? खेल ले यार, ठीक चीज नहीं हो रहा यार, खेल ले यार. उसका थाई गया भाई, वो टैकल भी पागल था और उसका थाई गया उसके बाद. नाउ ही इज गेटिंग सब्ड ऑफ प्लस ही इज So he's having thigh problem or ACL Calf, something. Calf. Yeah. Maybe. हाँ. he dived the correct decision. He dived the correct way. But it was a good penalty, good height. हाँ वो हम उसकी अगर जो पेनल्टी शॉट भी देखे तो वो वहीं ही जा रहा था मोस्टली, वैसा ही वाला तीन है. इधर थे, दो I इधर थे. hate दो, McAllister हाँ. यार. And they still have Salah to come on. Yeah, that's Yeah. and now तो ये मतलब it adds up ना, बिल्कुल आना चाहिए उसको, अभी तो आना ही चाहिए. ऐसा है. But I guess मैच तो अपना चलता रहेगा. But you have something else to say, Vishal? No. I think we covered all the 4 leagues that we definitely wanted to talk about. We covered the Barca game and a little bit of the United game. Chelsea have a game coming up tomorrow night, right? Yes, tomorrow night. Yeah, for Indians, India that is Tuesday night. But for English fans, it's Monday-ish. Good, Yeah, good late. start to the week. But Yeah, good. Mondays are already bad, bro. We are already going to suffer. अच्छी बात है, मतलब सफर. देखो असल में क्या है ना, गंदे में गंदा हो तो अच्छा भी मतलब समझ नहीं आता ना किसका गंदा है करके, है ना. बट अगर अच्छे में जैसे आपका वीकेंड वाला मूड है, उसमें कुछ गंदगी हो जाए तो आपको हफ्ते भर याद रहता है कि हाँ कुछ चुतियापा हुआ था करके. But It's Newcastle. on that note, we Yeah. hope आप सबका viewers का हफ्ता अच्छा गया हो, and it ended on a good note with our stream today. हैं क्या बात कर रहे? YouTuber बन रहे हैं. हाँ, यूट्यूबर बन रहे हैं. Yes, that is But important. yeah, Osani, Shriharsh, Shreya, any last words? Last words no. Last Visca words. Barca. नहीं क्या नहीं. डिस्को Visca बार्सा? Barca डिस्को बोलूंगा. डिस्को बार्सा? Visca डिस्को Barca. क्या होता है? अच्छा, छोड़ो विस्का यार. बार्सा. Okay. क्या है यार? I thought that's disco Every day Barca, is so a I new was day like, for bullshit. yeah. Also, happy birthday to the club Happy that I birthday, support. Chelsea. Either I'm not Chelsea well, so 109. I'm not in the best of moods, but yeah. Otherwise, Up the Chelsea KT BFFH. Yes, bro. So with this note, we मतलब हाँ ठीक है चलो खैर वो that's another thing. But with this note, we end our this छोटा सा नहीं बट ठीक ठाक है यार. 1.5 घंटा 1.25 घंटा तो अपन ने भी निपटा दिया यहाँ पर. So with this note, we end our stream number 8. I hope आपको थोड़ा सा कुछ मजा आया होगा. अपन कुछ करते रहते हैं यार, प्रयास कर रहे हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो हम गरीब खानों में से लाइक छोड़ के जाओ, कमेंट छोड़ कर जाओ और ऐसे सब्सक्राइब दबा के जाना और साथ साथ बेल आइकन भी दबाना प्लीज दबाना और लोगों को शेयर करना, बताना कि 3 4 5 बंदे हैं, उन लोग बैठते हैं कुछ बात करने के लिए. या ना मतलब होना चाहिए. अपन इंडिया से बैठ रहे हैं, इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन, 1 मिलियन तो हो ही सकता है इसी बहाने में. 1 बिलियन 100 100 के तो हो ही सकता है ना. कितनी बड़ी बात है.
डॉग बाबा लोग के चैनल में इट्स लाइक 280k 300k समथिंग, और यू नो अजीम बनाट वाले लोग को देख लो, दे आर हैविंग गुड सब्सक्राइबर, वी कैन आल्सो टेल, बट हाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करना, अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू विशाल, थैंक यू श्रेया फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम। आई होप आपका अगला हफ्ता बहुत 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 सुंदर रहे। मतलब मैं सुंदर ही बोल पाया, मैं कुछ और बोलने वाला था, मैंने अपने आप को रिफ्रेन किया, मैं बोला नहीं, बट हाँ आई होप आपका अच्छा जाए। एंड आप हमें भी होप करिएगा कि चेल्सी कल का मैच जीत जाए, न्यूकासल से खेल रहे हैं हम लोग, आप भी होप करिए। हाँ तू मुंडी हिला ले, तू तू तो तेरे से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता ओसानी टू होप फॉर एनीथिंग फॉर चेल्सी बीइंग बेटर, बट खैर थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई होप ऑल इज वेल विद यू, आपका अच्छा, आप एवरीथिंग गोज वेल, या Okay, thank you guys. Bye bye. Bye.